Hello Java developers. In this video, we are going to discuss our next program of basic maths topic. Okay, this is our 500 program series, and we are discussing basic maths programs. So this is our next question problem: kilometer to meter conversion. Okay, so we need to convert kilometer into meter. So how to convert this? किलोमीटर को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारा मीटर. So let's do this in VS Code. Okay, create file. यहाँ पे हम क्या लेंगे? मीटर ले लेते हैं या तो मीटर टू kilometer kilometer to meter. That's fine. No, to meter dot java. Okay, go inside this, create public class kilometer to meter. Go inside this class and create man method public static void man. Go inside this, create scanner class object scanner sc equal to new scanner system dot in semicolon. After that, what we can do? Kilometer to meter conversion. Okay, so take first value as input in kilometer. So system.out.println enter kilometer. और यहाँ पे हम ln को रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये नेक्स्ट लाइन में हमें शिफ्ट कर देगा वन बी. एंड टेक वैल्यू एज इनपुट, और इट मे बी डबल टाइप or can also take in integer type. Okay, kilometer equal to sc dot next double semicolon. After that, write here formula double meter इक्वल टू, या मीटर के लिए एम ही ले लेते हैं, एम इक्वल टू के एम मल्टीप्लाई बाय 1000 सेमीकोलन एंड नाउ प्रिंट. ओके, एज सिंपल. ओके, के एम टू मीटर conversion is plus m, and now run this program. Run this, enter value and kilometer. We take 12 kilometer, so it will give us 12,000 kilometer, 12,000 meter. Okay, so because we are converting kilometer to meter, so this is very simple. You can also find out through this formula. Okay, so thanks for watching. Please like, share and subscribe if this video is helpful for you.